Hello, Assalamu alaikum. It's my name is Akooji Badat. I'm a taxi driver for Kirklees Hackney College. As a Kirklees Hackney College. Usually drive from the Batley postal area. Today's date is 2nd of December. I think it is 2nd of December 2016. It's early hours of Friday morning, and I'm just addressing the matters relating to especially the CCTV in taxis, which is at this stage a proposal until I think 2nd or 3rd of February 2017. And as per the date given to us for the proposal dates, all comments, etc., is welcomed by Kirklees Council. We had a meeting, I called a meeting at the Snowdon Street Mosque, where you can hire the hall. The taxi drivers from all over Kirklees were invited, but I obviously expected the taxi drivers from the Batley Dewsbury area to attend. The attendance was not very good, but one of the main persons, who is a councillor, current councillor of Dewsbury West, I think, or Dewsbury area, Councillor Mumtaz Hussain, was also there, and he was the previous chairperson of the subcommittee for taxi drivers in Kirklees Council. So he was very helpful, and his advice was also taken on board. So anyway, initially we got this letter from Mr. Russell. I've got it somewhere here. Anyway, the meeting which took place on at Snowdon Street Mosque, and I replied to it in accordance with the outcome of the response. So this is from Akooji Badat, and I wrote this letter to Mr. Russell Williams of Kirklees Council, together with the police and the licensing officers and the councillors and all concerned. And this is what I wrote back as a response from the meeting. The article is also in all over the newspapers. Anyway, this is what I wrote. On 24th of November 2016, I sent this email. I am responding to the above CCTV in taxis proposal consultation, and several other things debated and discussions took place at our meeting chaired by myself, held at Snowdon Mosque, 22nd 11/16. Firstly, we talked about the CCTV. The advantages and disadvantages were heavily debated, and the unanimous decision of the attendants was that it should not be compulsory and should be up to drivers. This was especially because drivers wouldn't have access to their own equipment, and thus indirectly making drivers pay for customers, as well as easy for police and KMC. Customers who are fearful nowadays can provide own mobile phone recordings. Some customers surveyed privately by myself are against the privacy being invaded. Please note, if made compulsory, then a rogue taxi driver would in any case defeat the object by making sure he destroys the evidence collected via data, as he would easily make excuse to quickly destroy all evidence. Hence, but please remember, vast majority of taxi drivers are sensible people. Further, some taxi drivers already have CCTV, which is easily accessible, currently fitted in their taxis, whilst anyway, to cut a long story short, brothers and friends, colleagues from Huddersfield, you're all my friends and colleagues. It doesn't matter whether you're a Hindu, Muslim, Sikh, whatever religion, so long as we're taxi drivers, we should unite together and give a united response. Now, just be careful
how the council, the co-council, Kirklees, Leeds, Huddersfield, whatever, York, I think there's about 5 councils together that's trying to implement this CCTV. Now the CCTV subject is advantages as well as disadvantages for taxi drivers. The advantages are obviously that it gives you protection, but a taxi is a place of your employment, right? In a sense, and 8 hours work, 8 hours rest, 8 hours play, work, rest, and play, like the Mars bar advert. So if you're working 8 hours, would you really like your privacy to be invaded? I'm sat here in my home. Would I like cameras in my house? Would the licensing officers like cameras in their house? It's invading people's privacy. I've interviewed a lot of customers as well, and they don't even like it, because it's actually invading people's privacy. I mean, you won't have access to it anyway. It's a data protection thing, and under the freedom of information, you would have to apply, and it's all, you could fit your own cameras. That was the outcome of the meeting. Now, Councillor Mumtaz Hussain was trying to encourage people that it's for the safety, and we pointed out to him that there are more disadvantages for the taxi drivers than advantages. So most taxi drivers that I've talked to are against it. Some of them who are naive and not understand this matter are basically saying we don't know, or we're in favor, this, that and other. So anyway, I'm going to address it a little bit in Urdu as well. तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो एक बार आ गया ना, तो फिर समझ लो कि हमेशा के लिए आ गए, और फिर हर साल MOT में भी हमें इसके बारे में मेक श्योर करेंगे कि करना पड़ेगा कि ये ऑन है कि नहीं, और हमेशा हर साल पार्ट ऑफ द टेस्टिंग थिंग होगी. तो ये एक बहुत डेंजरस आइटम ये लोग ला रहे हैं, और हमें गट्ठे होकर मना करना चाहिए, इसको रिजेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है. आप लोगों को पता है ना कि आप घर में बैठते हैं, तो आपके घर में आपको कैमरा अच्छा लगता है, आपके बीवी बच्चे के साथ है. ये टैक्सी तो एक हमारी मकान है, एक हमारा घर है, जहां हम हमेशा रहते हैं. और अगर कोई भी रिकॉर्डिंग हो तो पुलिस और लाइसेंसिंग ऑफिसर्स और इनके लिए ज़्यादा हमारे लिए वक्त नहीं होते. ये ज़्यादा वक्त कस्टमर के लिए निकालते हैं. आपको पता है कि कितने बार हम लोग तो यूनिटी करते ही नहीं है. अब तो हम सब लोग ने चूड़ियाँ पहन ली है. जहाँ भी देखो टैक्सी ड्राइवर बोलेंगे वो बॉस लोग करेंगे, ये करेंगे वो. कभी मैं मीटिंग बुलाता हूँ तो कितने हज़ार में से 100 आदमी भी नहीं आते हैं. इट्स सच अ शेम ऑन यू, मी एंड अस टैक्सी ड्राइवर्स. अब तो हम लोग इतने जहालत बन गए, इतने जाहिल बन गए, इतने बेवकूफ़ और बदतमीज़ बन गए हैं कि कुछ किसी को पड़ी नहीं है. चने के दाने के हिसाब से वेज भी ले रहे हैं, समझे ना. किसी को कहना चाहिए, आई एम सॉरी, बट मुझे कहना पड़ता है कि ये रेट्स भी जो है ना, उसके बारे में भी हमने डिबेट की थी कि भाई पाकिस्तान में गो ऑन द ऊबर ऐप्स, और पाकिस्तान में वहाँ वो कराची या कोई भी इलाका हो ना, तो वहाँ वो टैक्सीज होगी, यू कैन सी इट ऑन द ऊबर, और वहाँ हम 150 रुपयों से टैक्सी इस्तेमाल होती है, स्टार्ट होती है. तो यहाँ वी वर्क इन ऑन पीनट रेट्स, एंड एवरीबॉडी इज सेइंग वो तो बॉस लोग समझे, ये समझे, वो समझे. इट्स नॉट अप टू द बॉसेस, इट्स अप टू यू ड्राइवर्स. It's not about the bosses are, they're running a franchise. They don't really care much. But it's up to you. जब भी हम कोई मीटिंग वगैरह बुलाते आते ही नहीं है. बुज़दिल बन गए हो, जाहिल बन गए हो, चूड़ियाँ पहन ली है. हमेशा एक ही बात रखते, कौन मेरे वालिद आएंगे तुम लोगों के लिए ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो ठिकाने सॉर्ट आउट करने के लिए. तुम लोग घर पे बैठे रहेंगे. अगर कभी कभी हमारी इज्जत की सवाल होता है तो हमें निकलना पड़ता है. कम आउट इन दिस पीसफुल प्रोटेस्ट, दिस दैट एंड अदर. आई मीन देयर ओनली एवरीबॉडी इज एक्चुअली वॉर्निंग अबाउट इट, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट. घर में बैठे बैठे तो नहीं हो सकता है ना. तो मेरे भाइयों और दोस्तों, माइंड नहीं करने का, लेकिन अभी हम कोई मीटिंग बुलाए तो इसमें आओ, हिस्सा लो, और
अभी इतने गिरे हुए हैं कि जो भी हो टैक्सी ड्राइवर पे पेशाब कर कर चले जा सके, जो भी हो इनको ये कानून लाकर रख देते हैं और हम चुपचाप कुछ भी नहीं करते हैं. इसी so down degrading and it's ridiculous basically, and this is because you don't support. I mean, people like me, I'm willing to support at my own cost, but coming out, and that's why we so low down. Anyway, talking back about this, ये CCTV एक बहुत डेंजरस आइटम है और इसमें कस्टमर की ज़्यादा सुनेगी, हमारे नहीं सुनेगी. और इसमें पहले तो इनिशियली तो ये लोग बोलेंगे कि ओके हम तुम्हें पैसे देंगे, फिर तो ये तो अभी तो 25-30 पाउंड में मिल जाते हैं, लेकिन ये तो प्रॉपरली डेटा प्रोटेक्शन की सिस्टम से ये फिट किया जाएगा और इसमें एक्सेस होगी सिर्फ पुलिस को और लाइसेंसिंग ऑफिसर को, राइट. तो जब भी कुछ हो गया तो छोटी छोटी बातों में इनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, लाइसेंसिंग ऑफिसर और पुलिस वाले के लिए तो, लेकिन इनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा, समझे ना, हमारे लिए. क्योंकि अगर कोई 10 पाउंड का फेयर भाग जाए तो वो थोड़े कोई हमारे लिए दौड़ते फिरेंगे. इनके पास वक्त भी नहीं है, वक्त भी नहीं है. तो कुछ हो जाए तो एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमेशा हमारी प्राइवेसी, हम कभी कभी टैक्सी में उल्टी सीधी बातें भी कर लेते हैं, कस्टमर से मजाक भी कर लेते हैं, ये वो. तो ना तो कस्टमर को ये पता है कि ये कितनी प्राइवेसी इन्वेडिंग चीज़ आइटम है, और ना तो हमने ये सोचा है, ज़्यादा सोचा है, इस पे सोच डाली है. लेकिन जो हम कम्युनिटी वाले हैं, खास कर मेरे जैसे आदमी, और हमने मीटिंग में इसके बारे में बातें की है, तो हमने इस बात पे अंदाज़ और फाइनल डिसीजन ये किया है कि ये बहुत डेंजरस आइटम है. सो जस्ट बी केयरफुल, राइट. दैट्स वो जो इन लोगों ने प्रमोशन का 4-5 पन्ना भेजा है, तो उसको पढ़ो और फिर बराबर सोचकर आप अपनी ऑब्जेक्शन डालिए. जस्ट राइट टू द लाइसेंसिंग और मिस्टर रसल और हुएवर, छोटा सा भी, या तो अपनी ऑफिस में अपने बॉस को बोलो कि भाई छोटा सा पटिशन आप लोग कराइए, साइन करिए और बोले कि वी डोंट वांट दिस, समझे ना. ये 500-600 पाउंड निकल जाएंगे आपके, और फिर हर साल इसको करना है, और एवरी टाइम योर ड्राइविंग आपको ये ऑन करना पड़ेगा, शायद ऑफ करना पड़ेगा. और फिर बाद में रिमेंबर, पहले तो ये बहुत मीठे मीठे होते हैं, फिर बाद में बोलेंगे अभी ये चल नहीं रहा था, आपने ऑफेंस किया, ये किया वो किया. ये हमें घर का खाना खाकर क्यों चाहिए? मैं तो 30 साल से टैक्सी ड्राइविंग करता हूँ. I've never really needed it. Why do we need it? एवरी ईयर ये कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ हम पे डालते हैं. देते कम है, लेते ज़्यादा है. कानून हमेशा हमारे खिलाफ बनाते हैं और कस्टमर के फेवर में, और कहलाते ये है कि ये कस्टमर और टैक्सी ड्राइवर दोनों के लिए. हकीकत में अगर हमारा खून हो जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, तब तो यस, टू बी फेयर इनफ, the police do give a damn. But otherwise, they don't really give much damn about us. And it's more disadvantage than advantage. They make it sound as if it'll be all hunky-dory and very nice. But just be careful. Object to it. हमारी स्नोडन मस्जिद में रोज़ ज़ोहर के नमाज़ पढ़ने के लिए हडर्सफील्ड से भी काफ़ी टैक्सी ड्राइवर आते हैं. उनके साथ भी मैंने मशवरा किया है, and they're all against it as well. So those people who have given a good thought to it are against it. And as far as our taxi fares are concerned, चने के दाने के दाम पे हम काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमें बहुत सोचने हैं. और एक बार हमें प्रोटेस्ट करनी है, and this time the protests shall be with the central government. So inshallah, look out for my videos. Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, kaha suna maaf. I'm just trying to help you. Akooji Badat, Friday, 2nd of December 2016. I've also got a lot of apps messages from all kind of drivers who are also saying ye kehna wo kehna. Oh, finally, about 5-6 years ago, from the cameras, some sort of grant was obtained for £10,000,
To 10,000 pound, I think the licensing, Cath and them they only gave 7-8 cameras out. So that we still should have about 9,000 pound, 8,000 pound. I think a chairman from Huddersfield called Amjad at that time, he put a heavy question in about this, but we haven't got any response. So, this is all about cost. And then not just the cost, एक बार पैसे खर्चे और काम खत्म हो गया, बात भूल गए. This is about extra work as well. There is some element of safetiness for taxi drivers, but the disadvantages hugely outweigh the advantages. That's the message. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz.